Welcome to TechVista, where we'll be helping you out to, discover, define, and decide that which technology is actually meant for you. So, this is what we'll be doing in this event, and we have some amazing people with ourselves who will be helping you to do that just as well. And we also have a very interesting activity that we'll be doing. That is a movie quiz, and whoever wins would be going on to win a Google T-shirt. So, because we are Google Developer Student Clubs, and for those who don't have any idea that what is Google Developer Student Clubs, that we are a club that was established just this year, and we are powered by Google, not sponsored by Google. That some people have that mentality that it is sponsored, but no, it's not actually. It's powered by Google. So our club is powered by Google, and Google gives us this amazing technologies to conduct these events. Like a few days back, we conducted Google Cloud Study Jam, where over 150 participants participated, and they got to know about Google Cloud Study Jam and a lot of other things about Google Cloud and generative AI. So it was a pretty successful event. We were in tier one, the highest tier possible, and so on and so forth. We'll have a few more events which we'll be talking about. So let's just start. So, like, why do you actually need to, choose this? So, because you must choose and you must choose wisely. It's just that this is a quote from Indiana Jones, one of my favorite movies that I always watch. So, see, you're all doing BTech, BCA, BSc ITs, and a lot of other courses. The thing is that you need to, you are doing this course because you feel that tech has a good career opportunity, which is really right. And you think that if I am pursuing a career in tech, I need to do something. And that something is the question, that what do you actually want to do in order to succeed? Well, the answer is variable. You can't really answer that without really knowing about the technology. So that is why we have put forward this presentation for you, so that you know that what you actually have to do. So the first part is introduction and the quiz. So we start with an introduction which was just done, and then we'll have the quiz just right now, and then we'll be exploring the technology. I'll be looking forward at the various domains, their prospects, and the usage. How do you actually choose, and how will GDSC help you in doing all of this? We'll have a Q&A and networking session, conclusion, and the result declaration. So this is what is there. All right. So let's just start with the event now. So I hope you'll really enjoy this event. So before we start out, I just have a quote for you all. The future is created by what you do today, not tomorrow. This was by Robert Kiyosaki. And then we have the how the real world tech looks like. So this is a segment we called how the real world tech looks like. And this is something that I really want to talk to you about. No. So the truth is, the current scenario, the truth is that 80% of students who are currently pursuing bachelors have no idea that what they are going to pursue after they pass out. So, like, if I ask you a question right now, that if you're going to graduate tomorrow, what is the one thing that you'll be applying the job for? And I'm pretty sure that you have many of you, like 80% of the students, don't have the answer for it. And it's totally fine, because we are still exploring the options. We're still looking out for the options that are good for us. And which is good, because which is why we are here to help you out in choosing the right thing. And tech has the highest paying job, which is why you're all doing a degree in tech. And even if you're not doing a degree in tech, there are many people who are switching out in tech just because it is a higher pay range. And the journey is very long. So we are just starting out right now. And because there are n number of options in tech, you need to choose, and you need to choose very wisely. And it's not like you cannot change a domain after you have chosen one. But obviously, if you start working in a domain and you gain some experience, it's going to be very useful for you. So, and after choosing what do you have to do, which is what we'll tell you. So these are the domains that we'll be exploring now. The data structures and algorithm, web development, app development, AI, ML, data science, cybersecurity, and blockchain. So we are not going to
teach you these domains right now. We are going to give you a like mid-level overview that what do you actually need to do in order to pursue these domains. So just understand what these domains really are, and then what do you need to do in order to pursue a career in these domains. So we'll be starting with web development first, and it is being done by our web development lead, Vaibhav Shukla. So I just hand over this to Vaibhav. Vaibhav, you can turn on your camera and unmute. Yeah, I've turned on my camera. Can you all guys hear me? Yes. Yeah, sure. So, hello guys, my name is Vaibhav Shukla, and I'm your web development lead. And I'll be giving you a brief introduction about what does it includes, और इसमें क्या-क्या चीजें आप क्या-क्या opportunities आप लोग pursue कर सकते हो. So we'll start off by addressing the question, what is web development? So as the name suggests, it of course uh, consists of creating websites, but there's more to it. तो वेब डेवलपमेंट एक बहुत ही छोटी ब्रांच थी स्टार्टिंग में जब ये आई थी. लाइक उसमें सिर्फ एक स्टैटिक पेज आप बना सकते थे. आप हो सकता है खाली टेक्स्ट लिख सकते हो, हेडिंग लिख सकते हो, आप अपनी फोटो डाल सकते हो, आप अपना प्रोजेक्ट्स वगैरह डिस्प्ले कर सकते हो. इससे ज्यादा आप पहले के टाइम पे वेब में कुछ नहीं कर सकते थे. बट आज के टाइम पे आप उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम हो गया, आपका अमेजोन हो गया, गूगल हो गया. ये सब चीजें सिर्फ एक वेबसाइट के अंदर कंसिस्ट करती हैं और ये इतनी स्केलेबल होती हैं जिससे मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज बन जाती हैं. सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी दैट यू शुड गाइस परस्यू. और बाकी अब बात करते हैं व्हाट डज इट ऑफर. जैसे मैंने बताया, पर्सनल पोर्टफोलियो आप बना सकते हो, अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो जिसके बेसिस पे कंपनीज आपको हायर कर सकती हैं. आप खुद के प्रोडक्ट जब बनाओगे तो आपको कहीं ना कहीं उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा, तो वो आप अपनी खुद के पोर्टफोलियोज बना के डाल सकते हो. नेक्स्ट आप खुद के डेली यूज के टूल्स बना सकते हो. और दिस इज लाइक द बेस्ट मोटिवेशन टू गेट स्टार्टेड विद, बिकॉज जब आप कुछ चीज खुद के लिए बनाते हो तो आपको खुद से चीजें बनाने का मन करता है. सेकंड, अभी मैं रिसेंट एग्जांपल दूं, मैंने स्पॉटिफाई का एक एक्सटेंशन बनाया था क्रोम के लिए, जिसमें आप अपनी प्लेलिस्ट दो अकाउंट्स के बीच में सिंक कर सकते हो. यू माइट बी लाइक क्रोम एक्सटेंशन वेब डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है. जो भी आप टेक्नोलॉजीज वेब डेवलपमेंट के लिए सीखते हो वही सेम टेक्नोलॉजीज आप क्रोम एक्सटेंशन में भी यूज करते हो. तो वो चीजें होती हैं. और प्लस प्रोजेक्ट्स जो मैंने अभी आपको बताया, प्रोजेक्ट्स वगैरह जब आप बनाओगे, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग आप लोग मेजोरिटी ऑफ लोगों के पास रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के एक्सपीरियंस नहीं होंगे, आप लोग जॉब वगैरह नहीं करते हैं, तो फिर कंपनीज आपको कैसे हायर करेंगी? वो आपके प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे आपको हायर करेंगी. और मे बी यू कैन एंड अप क्रिएटिंग समथिंग ग्राउंड ब्रेकिंग, जो कि आप में से कई लोग करेंगे, आई एम प्रीटी श्योर. मूविंग ऑन, अब बात करते हैं मेन जो वेब डेवलपमेंट होता है आपका, उसमें पार्ट्स क्या क्या होते हैं. तो वैसे तो ये बहुत ब्रॉड टर्म्स होती हैं इसमें, लेकिन अगर हम मेन बात करें तो पूरी वेबसाइट सिर्फ दो चीजों पे काम करती है, फ्रंट एंड और बैक एंड. फ्रंट एंड वो पार्ट होता है जहाँ पे जो यूजर है उसमें जो सामने डिस्प्ले हो रहा होता है वो फ्रंट एंड होता है. अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे इंस्टाग्राम है, उस पर आप कोई पोस्ट अपलोड करते हैं तो उसका जो लाइक बटन होता है, उसका जो कमेंट सेक्शन होता है ना, जिससे आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, वो एक फ्रंट एंड इंजीनियर ने ही बनाया होता है. लेकिन उससे इंटरैक्ट करते टाइम जो लॉजिक चलता है, फॉर एग्जांपल आपने लाइक पे पोस्ट पे डबल क्लिक किया, वो लाइक हुआ, ठीक है, वो दिख रहा है, वो फ्रंट एंड है. बट जब वो लाइक बढ़ता है, जो वन जो 1+ नंबर बढ़ जाता है, जो जहाँ पे जाके स्टोर होगा, वो बैकएंड का हिस्सा होगा. और वो आपको नहीं पता, वो एक ब्लैक बॉक्स है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है एज अ यूजर. बट वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, वो लॉजिक एग्जिस्ट करते हैं, और वो ही बैकएंड का हिस्सा होता है. मूविंग ऑन, अब फ्रंट एंड की थोड़ी और बात कर लेते हैं. फ्रंट एंड कैसे लोगों के लिए बेस्ट रहता है मेरे ख्याल से. अगर आप एक वेबसाइट को बनाना इमेजिन कर सकते हैं, अगर आपका कलर्स को लेके कलर कॉम्बिनेशंस को लेके आपका एसेंस बहुत अच्छा है, आपकी इंस्टिंक्ट बहुत अच्छी है कि कौन सी चीज कहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए, किस तरीके से डिस्प्ले होनी चाहिए, एक बटन है उसकी अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए, उसके कलर्स कैसे होनी चाहिए, अगर आपको इन सब चीजों की इंस्टिंक्ट बहुत अच्छी है, तो आपको डेफिनेटली फ्रंट एंड में जाना चाहिए. बहुत ज्यादा स्कोप है. मूविंग ऑन, अगर बैकएंड की बात करें तो इट्स लिटरली लाइक अ ब्रेन ऑफ अ वेबसाइट. तो अगर आपको लॉजिक बिल्डिंग आपकी बहुत अच्छी है, रैशनल थिंकिंग बहुत अच्छी है, आप कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स वगैरह आप अच्छे से बना सकते हैं, आपका डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह, जो कि अभी भूपेश आपको बताएंगे डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में, अगर उन सब चीज़ों में आप बहुत अच्छे हैं, आपको स्टोरेज मैनेजमेंट वगैरह सर्वर्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, सर्वर्स के भी बारे में मैं आपको बताऊंगा, अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. अगर आपकी इन सब चीज़ों में नॉलेज बहुत अच्छी है तो आप बैक एंड में जा सकते हैं.
मूविंग ऑन, अब इसमें बैकएंड का हिस्सा है वैसे तो क्लाउड, लेकिन इसको अलग से इसलिए माना जाता है क्योंकि मान लीजिए आपने वेबसाइट बना ली है, आपने फ्रंट एंड सीख लिया, ठीक है, आपको बैकएंड भी आता है, कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको उसको होस्ट करना पड़ेगा कहीं, क्योंकि आप खाली अपने कंप्यूटर में उस वेबसाइट को तो रख नहीं सकते, कहीं ना कहीं दूसरों को भी एक्सेसिबिलिटी देनी पड़ेगी। तो उस एक्सेसिबिलिटी को देने के लिए आपको उसे कहीं ना कहीं होस्ट करना पड़ेगा। अब उन होस्ट करने के लिए आपको उन्हें सर्वर्स पे डालना पड़ेगा। सर्वर्स का मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, सर्वर्स होते क्या एक्चुअली। सर्वर इज लाइक अ कंप्यूटर जो आपके पास खुद के पास नहीं है, वो किसी रिमोट लोकेशन पे है, मान लीजिए बैंगलोर में है या मुंबई में है, जो कि आप सेकंड पिक्चर में नीचे देख भी सकते हैं। इस तरीके से डेटा सेंटर्स वगैरह दिखते हैं, और इनमें जितने भी सर्वर्स वगैरह होते हैं, जितने भी मशीन्स होती हैं, वो 24/7 अप एंड रनिंग होती है, क्योंकि अगर डाउन जाएंगी तो फिर आप वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो इन सब चीज़ों की मैनेजमेंट एक क्लाउड इंजीनियर करता है। आपने वेबसाइट बना ली है, होस्ट भी कर दी है, उस पर 2 यूजर आए चल रही है, 20 यूजर आए चल रही है, 1000 यूजर आ गए डाउन हो जाएगी। तो उसके लिए लोड बैलेंसर करके एक कॉन्सेप्ट होता है। इन सब चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को जो स्टडी करता है और जो मैनेज करता है, उसी को क्लाउड इंजीनियर कहते हैं। अब एक टर्म आती है फुल स्टैक इंजीनियरिंग की, कि एक, अगर कोई इंजीनियर है जिसको फ्रंट एंड का भी नॉलेज है, जिसको बैक एंड का भी नॉलेज है, जिसको डेटाबेस का भी नॉलेज है, जिसको क्लाउड का भी नॉलेज है, इन सब चीज़ों का अगर कॉम्बिनेशन किसी को आता है, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होती, एंड दैट इज कंसिडर्ड अ फुल स्टैक इंजीनियर। और इनकी डिमांड लाइक लिटरली, आई थिंक स्टार्टअप जो होते हैं वो उनको फुल स्टैक इंजीनियर्स ही चाहिए होते हैं, बिकॉज वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते फ्रंट एंड के लिए अलग बंदा हो, वो बैक एंड के लिए अलग बंदा, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आई थिंक उसके लिए दे गो फॉर, दे प्रेफर फुल स्टैक इंजीनियर्स। तो ये एक चीज है। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं एक और चीज, यहाँ पे मैं एक मिथ बस्ट करना चाहता हूँ। वो ये है कि आप अगर फ्रंट एंड है तो आप फ्रंट एंड का ही काम करेंगे, नहीं, जरूरी नहीं है। आप अगर फ्रंट एंड है तो आपको यूआई यूएक्स वाले के साथ भी इंटर कनेक्टिविटी बना के रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एज अ फ्रंट एंड इंजीनियर खुद के अकेले काम नहीं करेंगे, यूआई यूएक्स वाला आपको एक लेआउट बना के देगा, उस लेआउट को आप स्टडी करेंगे एंड फिर उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। उसी तरह अगर आप बैक एंड इंजीनियर हैं तो आप क्लाउड के साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि मान लीजिए आप, एग्जांपल दूं इसका, तो मान लो कोई आपने वेबसाइट बनाई है जिसमें वीडियोस अपलोड होते हैं। अब वीडियो अपलोड हो रहा है, वो बैकएंड का काम है, लेकिन अब सर्वर पे जगह ही नहीं है, तो वो नहीं हो पाएगा। तो उससे उसकी कनेक्टिविटी बनाने के लिए आपको क्लाउड इंजीनियर के साथ बैठ के काम करना पड़ेगा, क्योंकि काम आप हमेशा एक टीम में करते हैं, आप अकेले नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। अब इसके अलावा भी बहुत सारे रोल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यूआईएक्स बता दिया आपको। बाकी एक डेवऑप्स इंजीनियर होता है, जो कि पूरे डोमेन नेम खरीदना है, कब उसका फ्लो कैसे होगा, नया कोड आएगा तो पुराने वाले को चेंज कैसे करना है, ये सब चीजें एक डेवऑप्स इंजीनियर, जो वर्क फ्लो होता है कोड का, उसको देखने के लिए डेवऑप्स इंजीनियर होता है। एक वेब सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है, जो कि देखता है कि वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं है ना, पासवर्ड वगैरह का इंक्रिप्शन ठीक से लगा है कि नहीं लगा है, फायरवॉल वगैरह ठीक से है कि नहीं है, ये सब चीजें चेक करने के लिए एक वेब एनालिस्ट की जरूरत होती है। क्लाउड इंजीनियर मैंने बता दी, जो सर्विस वगैरह हैंडल करता है। और गूगल क्लाउड जैम में आई थिंक आप लोगों ने अच्छा खासा देखा ही था क्लाउड वगैरह कैसे काम करता है। सिस्टम डिजाइन आर्किटेक्ट, लाइक मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा प्रेफर किए जाने वाले सीनियर इंजीनियर्स होते हैं, बिकॉज कोडिंग तो एक फ्रेशर भी कर लेता है, लेकिन जो डिजाइन आर्किटेक्चर होता है ब्रॉड स्केल में बनाना, वो सबके बस की बात नहीं होती है। तो आई थिंक उसके उसमें बहुत अच्छा स्कोप है। और बाकी फ्रीलांस, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आप फ्रीलांस तो हमेशा ही कर सकते हो। एक बेसिक को किसी के लिए भी एक बेसिक वेबसाइट अगर आप बना के भी दे रहे हो, तो आपकी स्टिल वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा होती है। एवरेज सैलरी की बात की जाए तो स्टार्टिंग में 2.5 लाख आई थिंक इंटर्न्स की सैलरी होती है, जो कि हाई लाइक लेवल अप करते करते 15 लाख और उसके पार भी चली जाती है। बिकॉज आज के टाइम पे अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो, और मान लीजिए, क्योंकि स्केलेबिलिटी हमेशा जैसे जैसे बढ़ती रहती है वैसे वैसे डिमांड बढ़ती रहती है, और कंपनीज अगर स्केल कर रही हैं, जिस भी स्टार्टअप में है आप या किसी एमएनसी में, जैसे जैसे स्केल करेगी आपकी डिमांड बढ़ेगी, कभी कम नहीं होगी, तो सैलरी हमेशा बढ़ती रहती है। सो या, दैट वाज इट। रोड मैप की बात कर लेते हैं। तो मैं पर्सनली जो भी वर्कशॉप वगैरह लूंगा, बूट कैंप्स वगैरह, उसमें मैं सबसे पहले तो ये बताया जाएगा कि वेबसाइट एक काम कैसे करती है। लैंग्वेजेस वगैरह हम बात की बात आती है, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट्स काम कैसे करती हैं, रिक्वेस्ट क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है ना, जो ब्राउजर होता है उसका क्या रोल होता है वेबसाइट में, वो कोड को पार्स कैसे करता है, ये सब चीजें हैं, मैं आपको बूट कैंप में सिखाऊंगा। फिर उसके बाद फ्रंट एंड, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट से लेके राइट तक जैसे जैसे आप जाते हैं, आप वेब डेवलपमेंट इसी एग्जैक्ट क्या बोलते हैं, इसी एग्जैक्ट फ्लो में आप सीखते हैं। सबसे पहले आप HTML सीखते हैं, देन CSS, जावास्क्रिप्ट, फिर कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने यहाँ पे पाइथन डाल रखा है, बट नॉट नेसेसरली पाइथन,
आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा सकते हैं, उसी में एक बैकएंड फ्रेमवर्क सीखोगे आप, फिर उसके बाद डेटाबेस वगैरह सीखेंगे, क्लाउड होस्टिंग, डेवलप डिप्लॉयमेंट, ये सब चीजें आप सीखेंगे। इन सबको कंबाइन करके एक वेब एप्लीकेशन बनता है। आई नो इट साउंड्स अ लॉट बट एक्चुअली इट्स नॉट। अगर आप एक बार स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर चीजें अपने आप समझ में आने लग जाती हैं, और फिर वो इंटीग्रेशन वाला पार्ट अपने आप हो जाता है, आपको खुद नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आप HTML बनाएंगे तो CSS अपने आप उसके अंदर इंट्रोड्यूस होगी, आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, राइट। सो ये एक रोड मैप था, दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट वेब डेवलपमेंट इज। एंड उसमें GDSC आपको ऐसे हेल्प करेगा, बूट कैंप्स वगैरह होंगे, ऑफलाइन होंगे, एंड या सो सी यू देयर। Am I audible and visible? Yes, you are audible and visible. So, hello everyone. Myself Bhupesh, and now I will let you know about the data structure and algorithms. So, the data structures and algorithms plays a key role in your tech journey. And if we talk about your placements, then it is the most important part in your placements too. So, what is data structure? A data structure is a specialized format for organizing, processing, retrieving, and storing data. You can think data structure as uh, cells in a store. The book cells contains only books. The fridges contains only the food. So, in this manner, the data structure contains the specific amount of data in an organized format. As far as we talk about the data structure, uh, the next part comes why data structure are important, why they are important in programming, why they are important to the programmers. If we talk about programming, they act as a efficiency boosters by helping making our program faster and efficient to handle, and also they act as a problem solving tool for solving real world complex scenarios. Why I as a programmer need to put my lot of time in learning data structures. For example, if we talk about a building, if the base of the building is strong, then we can put various number of flats we want. So as to your programming journey, DSC acts as a foundational tool for it. It also helps you to reduce the code complexity by making the code cleaner, helping to write it in an easy and understandable manner. And you can think of data structure as a key to your advanced programming techniques and tutorials. As soon as we talk about data structure, algorithms are no longer left. Algorithm is a set of instructions that are followed in a specific order to perform a task. For example, let us consider we want to make a sandwich. Firstly, we will take the bread, then spread the mayo, add some ham, put some lettuce, top with another slice. Here it is, our sandwich is ready. Now, these instructions acted as a clear tool for us to solve the problem of making a sandwich. So, as to the computers, algorithms act as a guide for them to follow through a task. Now, let us understand the significance of algorithm with the help of library catalog system. I have immense amount of data of books in my library catalog system. The sorting algorithms will help me to organize that immense amount of data by the name of the author of the book or by the title, or can be it can be category. The searching algorithms will help me in finding through that immense amount of data in a very short period of time, and also effectively by reducing my cost. It also helps in reducing the storage by using the efficient data structures like trees and graphs. We can also reduce the storage, and scalability and maintenance are also a very uh, key role which algorithms helps in. For example, I want to change some books, add some new books, and replace, then algorithms without disrupting my org's already data, it easily do that. The next thing come are the use cases of data structure. The data structure finds is its uses across various domains, whether it's database, operating system, gaming, artificial intelligence, machine learning.
Every tech domain you find today has a application of DSA. For example, let us take some real world scenarios. The Google search uses searching and sorting algorithms for fast and relevant searches. Facebook's friend suggestion algorithm and content suggestion algorithms also are an application of DSA only. The Uber's driver matching algorithms helps you to connect to the shortest nearest driver near you. And the Fortnite also uses their algorithms for matching the appropriate player with their score and ranks. Now the next part come is the domains. Which are the domains I can explore after learning DSA? As far as you have learned DSA and you want to work upon some tech skills, whether it be a software development, a data analyst, machine learning, you can easily go through them without feeling hesitated or stuck at some point, because the DSA has already solved most of your needs which you will be requiring. And if we talk about the salary range, the average salary range of a DSA aspirant is from 3.5 to 37 as lakhs per year, as of their experience and the amount of knowledge they have. Now I have learned DSA. I am working as in a, oh, what is my relevance of my job? What is future relevance of my job? So my friend, technology foundation, any technology which today built, DSA has its backbone. If you talk about AI, there is an immense amount of data present to AI. It needs DSA's fast sorting and searching algorithms to search through that data for giving quick and fast responses to the users. Cybersecurity also uses encryption and routing techniques uh, uh, for protection in digital worlds. And there are a lot of emerging fields in the DSA, which is IoT, blockchain, and quantum computing. Now, let us have a look on the roadmap of learning data structure and algorithms. Firstly, the prerequisites which are needed for data structure and algorithms are first, the main thing is the programming language. If you have a good knowledge of programming language, it can be C++, Python, or Java, you can easily navigate through DSA. And also, if you are good at maths, then it will also be beneficial for you. The next part comes is understanding the basics like data types, variables, loops, if else statements, patterns, etc. After doing this, you can come up upon the data structures which we are having: arrays, linked list, stack, queue, tree, graph, etc. etc. You can go through them, learn about their kind, time complexity, space complexity, how they can be built, how can they can be manipulated according to us, how we can store data in them, how we can fetch from them. Uh, as you have learned data structures, now the next part comes is the algorithms. The algorithms will help us to uh, work on the data stored in the data structures easily and efficiently. Now you have learned data structures, you have knowledge of algorithms, you can go on to the practice part. As there are some advanced topic in the essay which are which I will not recommend you if you are a beginner. You can directly jump upon to the practice part. In the practice part, you can use online platforms like HackerRank, LeetCode for solving some problems which they have already out there. You have solved, let us say you have solved 200 plus questions, and now if you look at a question and you are able to make the approach of that solution, how can I further proceed in this, how can, which data structure is used here, which algorithm can be implemented here. So you are good to go to the competitive programming. Competitive programming, you will be uh, reducing the time and space complexities of the already uh, work upon problems. But if you find yourself stuck and not able to think of the approach of the problems, please uh, look back and clear your basics. It will be very beneficial for you.
That's all from my side. I will say if you want your career in the tech, then DSC is very, very important for you. If you want to have a good placement of over 10 to 15 LP or more above than that, you will be needing a DSC. If we talk about main companies, they have at least 2 rounds of DSC, which where they will be asking some problems and you have to solve there. And if you have zero knowledge of DSA, then sorry my friend, I don't think so you will be able to crack a good company or good placement. Yeah, that's all from my side. Thank you. Am I audible? Yes, you're audible and we can see you. Hello everyone. This is Himanshu Chara this side, Android cooling. We will be discussing about mobile application development in this segment. So first of all, we should discuss about what is mobile development all about is. Mobile development is like when you are developing Android application for your device or for your mobile device. This is known as mobile development. It is very exciting part. आप इमेजिन करिए कि आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो जो आपके मोबाइल में चल रहा है, आपके खुद के फोन में चल रहा है और आप उसको अपने दोस्तों को भी दिखा पा रहे हो. सो इट इज वेरी एक्साइटिंग. द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नाउ इज native and cross-platform development, use cases, and roadmap. Next, cross-platform development. First of all, what is the cross-platform development? You all know that there are two major players, iOS and Android in mobile operating system. When you are developing application for both of the platform at the same in the same project, it is known as cross-platform development. It is in this Flutter like languages like Flutter is used. Next slide, please. Nextly, native development. What is native development? When you are developing an application specifically for one platform, whether it is iOS or whether it is Android, it is known as native development. इसमें सबसे मेजर एडवांटेज ये रहती है क्योंकि आप नेटिव एपीआईज का यूज कर सकते हो, तो उससे जो एप्लीकेशन बनती है वो काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होती है एज कंपेयर टू क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस. स्लाइड. यूज केसेस. व्हाई शुड यू डेवलप फॉर एंड्रॉइड? मतलब आप एंड्रॉइड के लिए क्यों ऑप्ट करोगे? आप विंडोज के लिए बना सकते हो या आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए बना सकते हो, पर व्हाई शुड यू डेवलप फॉर एंड्रॉइड ओनली? Android has a very vast market size, whether it is e-commerce, whether it is social media, whether it is healthcare, education, finance, entertainment. Everyone is in Android. Everyone is in. आप चाहो तो देख सकते हो कि जिस तरीके से पहले अमेजोन थी, इंस्टाग्राम थी, ये सब वेबसाइट से शुरू हुई थी, लेकिन आज ज्यादातर इनका मार्केट एंड्रॉइड एप्लीकेशन से चल रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन से चल रहा है. इवन आपको पता है 3.6 बिलियन यूजर्स ऐसे हैं जो एंड्रॉइड पे है और ये 70% मार्केट कैप्चर करके बैठा है एंड्रॉइड ये मोबाइल एप्लीकेशंस का. प्रोस्पेक्ट्स. अगर आप एंड्रॉइड के फील्ड में कुछ करना चाहते हो, आपका करियर स्टार्ट करना चाहते हो, इफ यू वांट टू स्टार्ट अ करियर इन एंड्रॉइड, व्हाट आर द डोमेन्स यू कैन ऑप्ट? इट इज नॉट ओनली एंड्रॉइड डेवलपमेंट, इट include all mobile architect, mobile application developer, Android engineer, and it offers a wide range of salary ranging from 2.5 lakh for a beginner to 12 lakh per annum for a professional Android developer. Till now, if you have decided, you have made your mind that you want to start your career in Android, then this should be your roadmap. You should always focus on basics first. You should know about the basics of languages, how the coding works, how the logic works, and then you should start exploring about Android architecture, how the Android is structured, how many layers Android has, how the kernel of Android is working. Then you should explore Android Studio. Android Studio is the official IDE available for Android development. Then you should start making simple apps like calculator and all. Then you should engage with community. You can contact with us. We will help you if you want. Then you start. Then you should start making small projects, and you should try for internships. And you should always stay updated as Android is very dynamic. Next, we are going to discuss about the requirements. What are the basic requirements if you want to start? You should know about Kotlin, XML,
Java. Kotlin is the official language for Android development. XML is used for layout designing, and Java is the most basic language for Android development. You should have, from the hardware point of view, you should have a Ryzen 5 or i5 with 8 GB RAM Windows machine, that it is recommended, or you can use your Mac also. Hello everyone. I'm Ashish Rabu. I'll be helping you understand more about iOS development. Mobile app development has two parts. One is Android and one is iOS. There's only one thing first thing that you need to know about iOS development कि आपके पास एक Mac होना चाहिए. And this is a limitation in terms of iOS development that people who want to develop an app for an iPhone or a Mac OS or an iPad OS उनके पास एक आईफोन होना चाहिए. That's something which is required. Now, अगर आपके पास मैक होना चाहिए एक्चुअली. अगर आपके पास मैक नहीं है, then you can like there is no workaround. So अगर आपके पास है मैक या आप अगेन इंटरेस्टेड हो, then I'll be telling this for you. So इसमें क्या होता है? What you can actually do is a single IDE, like a single you are working on VS Code normally when you're developing any application. Now, Apple has an IDE called Xcode. You can develop an app for iPhone, iPad, Mac, or Apple Watch just in one IDE, which is very simple. And you can scale it according to the screen sizes, which is also very efficient. So, this is what Apple development is. We talked about the Android development, and just like that, Apple development works. But it's just that all of that thing can happen so seamlessly because frameworks and like you can see that every app on the iPhone has the same button. It's because they use UI kit, which is predefined frameworks. Like every other developer who is making an app on an iPhone would be using UI kit. So the buttons and everything, it is predefined and there is not much you have to do as a developer. And like we have drag and drop builders as well in Xcode, which can help you build very cleanly and quickly. Now, all of these programming is done in Swift, which is a new language released by Apple like recently. And then we also have Objective C, which is a part of a C language, which we learn in university, but it's not very much famous right now because Swift has taken over. Now, the Apple craze has taken over. Everybody wants to have an iPhone or a Mac. Now, 23%, 23.4% global share in the world iPhone has alone. So you can think about, I'm not just talking about like Android or iOS, I'm talking about iPhone alone. Then comes Samsung and then any other brand. So iPhone has a great market. So if you want to develop on an iPhone, it's a great thing. Like if you have a customer base in the US, 65% of the users have an iPhone. So that's something you need to think about if your customers are in the US. Now, what are the prospects? What Apple offers as a developer? Now, as I talked about, be it an iPhone, be it a Mac, be it like your watch, Apple Watch, be it your TV, everything can be done. And if you are specializing in one of these, you will be called that developer, like an iOS developer or a Mac OS developer. The OS you are developing for, you'll be developer for the respective thing. And if you're developing a game for one of these, you'll be called a game developer. So this game developer is actually, very specialized in the domain that you're actually working in. Like if it's iOS, then you're an iOS game developer, and so on and so forth. Now about the salary, it's from 6 lakhs to 36 lakhs per annum. Why? Because the competition is less. Because the if the market we are in the market, if we are searching for iOS developers, there are many less iOS developers who are searching for a job. So if the competition is less, the demand is more, and hence the salary is also more. Now, if you want to be an iOS development, firstly, have a Mac. Then you can learn the basics, master the Swift language. You can explore the Xcode, which is the official IDE. Obviously, build simple apps, same as Android. Learn UI Kit, which is a framework, and then do internship and projects and stay updated. Now, what are the requirements? Swift and Objective C are the programming languages you need to know, and you need to have an iMac or a Mac with a Mac OS in order to learn these. Now, the future relevance is for both app development, Android or iOS, is that the app development is not going to die. It's going to be there, and definitely,
can make apps for different things, for TV or your watch or anything, which is very much easy. And then it's like, if we talk about AI versus human part, like, if will AI take over your job? It's not like that. AI is not taking a job of a like an app developer, because the app is huge. There are huge number of things that only a human developer can do, and people are now preferring applications first rather than a website. So you need to also take care of that in mind. Now we have artificial intelligence. Our Android lead will help you do that, but he's going to tell you about artificial intelligence. Saransh? Hello everyone, can you hear me? I hope so. Yes, we can hear you. Okay, so like आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक आई गेस फर्स्ट ईयर के जितने स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने सबसे जो मेजर रीजन रहा होगा बीटेक चूज करने का, आई गेस एआई एंड एमएल ही हो सकता है. सो लाइक एआई एमएल क्या है? एआई एमएल लाइक बोल सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सिस्टम होती है जिसको लाइक हम लोग ऐसे प्रोग्राम करते हैं कि वो एक इंसान की तरह सोच और समझ सके. और जो एमएल होता है, मशीन लर्निंग, वो एक उसका सबसेट होता है जहाँ पे हम लोग एल्गोरिथम्स को फॉलो अप कराते हुए उसको लाइक बनाते हैं, उस सिस्टम को अपन डेवलप किया जाता है. नेक्स्ट, एआईएमएल का इंपॉर्टेंस क्या है? लाइक सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व कर देता है. फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर कोई रिपीटेटिव टास्क है, आप उसको ऑटोमेट करा सकते हो इसके थ्रू. ठीक है. और जैसे एक टाइम पे यार आपको लाइक सजेशंस होती थी, आज के डेट में लाइक अगर कोई चीज आपको चाहिए तो चीजें इजिली सजेस्ट हो जाती है. तो वहाँ पे टेक्निकल एडवांसमेंट उसमें आ रहा है. अभी धीरे धीरे हर एक चीज में एक तरह से असिस्टिव एआई आने लग गई है. फॉर एग्जांपल जोमेटो में अभी कुछ टाइम के बाद उसका जो एआई मॉडल उसका लॉन्च हो जाएगा, जिसमें वो हमें खाने की सजेशंस देते जाएगा ऑटोमेटिकली हमारे यूज केस के हिसाब से. और इसी तरह से लाइक एआई के थ्रू जो हमारी इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे एडवांस हो रही है. अब धीरे धीरे हर एक कंपनी अपनी किसी ना किसी चीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व कर रहा है. एंड उसके लिए वहाँ पे उनको एक मॉडल क्रिएट करना पड़ता है. एंड उसके लिए एक एआई एंड एमएल डेवलपर की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट, तो इसके एप्लीकेशन लाइक एआई एंड एमएल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एप्लीकेशन वो हर एक सेक्टर में आपको दिख जाएगा. फाइनेंस में जैसे कि आप बोल सकते हैं जो बोलते हैं डिफॉल्ट प्रिडिक्शन की चीज होती है. लाइक किसी ने लोन दिया है तो फिर वो कितने चांसेस है कि वो अपना लोन रिटर्न कर पाएगा कि नहीं, तो वो चीजें प्रिडिक्ट करने के लिए फाइनेंस में यूज होता है. मार्केटिंग में कस्टमर बेस पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एआई का. ट्रांसपोर्टेशन में फाइन्स वगैरह काटने हैं, जैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल आपकी कार ओवर स्पीड करिए तो आपका नंबर प्लेट जो स्कैन हो जाता है, वो सब चीजें भी एमएल के थ्रू होता है. स्पीच एंड इमेज रिकॉग्निशन का जो पार्ट है, फेशियल रिकॉग्निशन, आपने एमईटी में देखा होगा कि लाइक फेस स्कैन होता है, टीचर्स उसके थ्रू लाइक अपनी अटेंडेंस लगाते हैं, तो वो भी एक तरह से एमएल का ही पार्ट आ जाता है. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, जिसके थ्रू लाइक हम लोग जो बोलते हैं वो सब लाइक प्रोसेस किया जा सकता है, जिसके थ्रू लाइक आपने सुना होगा डीप फेक, सॉरी, लैंग्वेज रिलेटेड मॉडल्स क्रिएट हुए थे. रिसेंटली यूट्यूब में एक वीडियो फेमस हुआ था जिसमें लाइक शाहरुख खान की आवाज का यूज करके लाइक कोई भी टेक्स्ट डालते थे ना, उसका हम लोग को वॉइस मिल जाता था. एंड एंटरटेनमेंट में लाइक रिकमेंडेशन सिस्टम्स अब एआई का यूज करते हुए बनाए जा रहे हैं. नेक्स्ट, सो लाइक सबने एक चीज तो सुनी होगी, चैट जीपीटी. आई गेस काफी सारे स्टूडेंट्स यूज भी कर रहे होंगे अपने छोटे छोटे कामों को लाइक यूज करने के लिए. तो लाइक चैट जीपीटी एक ऐसी चीज है जो कि अपनी एपीआईज भी प्रोवाइड करता है, यानी कि बोल सकते हो अपनी लाइब्रेरीज, जिसके थ्रू आप दूसरे प्रोजेक्ट्स में या दूसरी चीजों में उसका भी यूज कर सकते हो. तो चैट जीपीटी का सबसे जो बड़ा यूज केस तो यही है कि आप उससे बातचीत करो, उसको क्वेश्चंस दो, आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके दे देता है. उसको आप कोई चीज पूछो, आपको पीपीटी बनानी हो, आपको असाइनमेंट कंप्लीट करने हो, उसको भाई आप सही से बता दो कि मेरे को ये चाहिए, तो आपको पूरा चीज अच्छे से दे देता है. उसमें एक पार्ट आता है डैली का, उसके थ्रू आप इमेजेस प्रोसेस करा सकते हो. आप चीजें एक्सप्लेन कर दो, एक प्रॉम्प्ट दे दो, तो आपको उस प्रॉम्प्ट के हिसाब से वो इमेज कन्वर्ट करके करके दे देगा. मतलब समझ जाइए एक सिस्टम एक टेक्स्ट को एक इमेज में पूरा कन्वर्ट करके दे रहा है. और इसके थ्रू ही लाइक जितने भी आप फ्यूचर में इम्प्लीमेंटेशन होने वाले हैं या जितने भी अब जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी है मार्केट में, वो सब चैट जीपीटी की ही मेनली अभी यूज करने वाले हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी काफी एडवांस हो चुका है. नेक्स्ट, सो लाइक एआईएमएल में लाइक अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि लाइक काफी ज्यादा वास्ट है, अभी काफी बहुत अच्छे से बूम करने लग गया है. तो इसमें अभी नए नए जॉब पोजीशन बनते भी जा रहे हैं. सबसे लाइक बेसिक जॉब पोजीशंस कुछ ये है, लाइक एमएल इंजीनियर, जिसका लाइक बेसिक काम होता है
एल्गोरिथम्स बनाना या मॉडल्स बनाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। एक होते हैं रिसर्च साइंटिस्ट जो काम करते हैं लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं उनको लाइक उन पे रिसर्च का काम करते हैं। और एक सबसे जो अच्छी और सबसे एक बोल सकते हैं इन फ्यूचर एक काफी अच्छी खासी ट्रेंड में एक जॉब आने वाली है, वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियर। इसका काम ये होता है सिर्फ इसको एआई से बातें करनी है। सिर्फ आपका पूरा टाइम सिर्फ जो आपका जो प्रॉम्प्ट होता है उसमें आपको सिर्फ दिन भर टाइप करके उसको क्वेश्चंस पूछनी रहेंगी, वो जो रिप्लाई देगा उसको लाइक रिफाइन करवाना रहेगा। अगर वो सही है तो उसको ओके बोलो, नहीं है तो उसको फिर चेंज करो तो वो नेक्स्ट रिप्लाई देगा। तो इसके थ्रू लाइक जो आपका मॉडल है वो और ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव करेगा। एट द सेम टाइम जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो चाहिए हमें चीजें, वो हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियर के थ्रू वो चीजें हम लोग एआई के थ्रू बहुत जल्दी पा सकते हैं। देन इसका रोड मैप लाइक थोड़ा ऐसा है कि आपको सबसे पहले तो पाइथन आनी चाहिए। उसकी लाइक बेसिक बोल सकते हो, लाइक सबसे ज्यादा यूज हम लोग एमएल मॉडल्स क्रिएट करने के लिए पाइथन का यूज करते हैं। उसके बाद कुछ जो बेसिक प्रोजेक्ट्स होते हैं आपको गेटहब में मिल जाएंगे या यूट्यूब में मिल जाएंगे। उनको आप एक्सप्लोर करो थोड़ा, उनको देखो, उनको क्लोन करो, उसमें जो कोड उनके बने हुए हैं उनको थोड़ा लाइक समझो। देन उसके जो मॉडल्स होते हैं लाइक आपने देखा होगा चैट जीपीटी हो गया या फिर इमेज रिकॉग्निशन के मॉडल हो गए या इसी तरह से और भी काफी सारी चीजें जैसे टेंसरफ्लो का एक पार्ट आ जाता है। तो इन चीजों को आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करो, इनके ऊपर कुछ वीडियोस मिलते हैं वो देखो। पहले स्टार्टिंग का जो पार्ट होना चाहिए आपका सिर्फ एक्सप्लोरेशन का होना चाहिए। उसके बाद फिर गिटहब में प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर करके उन पे काम करो या फिर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कुछ कुछ चीजें जो होती हैं लाइक उनमें चीजें ऐड करते जाओ आप। फिर उसके बाद आपने कुछ कुछ चीजें दूसरों के प्रोजेक्ट्स में ऐड करी, उसके बाद उनको मॉडिफाई करके आप अपने खुद के कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ, मॉडल्स होते हैं स्पेशली उनको। फिर उसके बाद आता है मेन चीज, जो एक एआईएमएल डेवलपर होता है उसका काम होता है एक मॉडल बनाना, एक सिस्टम बना के देना जिसका यूज जो दूसरे हमारे टेक्स्ट टेक्स होते हैं जैसे कि वेब डेवलपर्स हो गए, जो मेनली उसका यूज करके फिर अपने सिस्टम्स में इंटीग्रेट करते हैं। जीडीएससी की कम्युनिटी में आप जैसे हैं तो आप अगर एमएल के टीम में हैं तो आप वहां पे आप अपने मॉडल्स क्रिएट करिए। आपके जो फ्रेंड्स वेब डेवलपमेंट में वो उनके बैकएंड का काम कर रहे हैं, आप उनके साथ टाई अप करके एक पूरा प्रोजेक्ट अपना बना सकते हैं। तो इस तरह से आप धीरे धीरे अपने एमएल के प्रोजेक्ट्स को फाइनल फेज में ला सकते हो जो होता है इन डेवलपमेंट का फेज। एंड लाइक जो एआई के टूल्स जो कि अभी काफी ट्रेंड में है उनमें से कुछ ये हैं, चैट जीपीटी, ब्रेड, मिड जर्नी भी काफी अच्छी है, डेली डिजाइन डॉट एआई अगर आपको कुछ डिजाइन वगैरह क्रिएट करनी होती है। एंड दैट्स इट। एंड इसके बाद नेक्स्ट, एंड ये कुछ मूवी सजेशंस हैं, अगर इन आई गेस इनमें से तो सबने सारी आपने देखी होगी शायद तक, बट फिर भी इफ पॉसिबल आज इनमें से कोई ना एक मूवी देखना। एंड उसके बाद एआई को लेके जो आपका पर्सपेक्टिव है वो पहले से थोड़ा अलग हो जाएगा। बचपन में एआई देख के जैसा लगता था और अब एक एज ए इंजीनियर आप जब इन मूवीज को देखोगे, इसमें होने वाली चीजों को देखोगे तो आप खुद रीजन करोगे कि ये चीज कैसे हो सकती है और क्या क्या हो सकता है। और सो या All right. Thank you, Saransh. Rama, please turn on the camera. Am I audible? Yes, you are. Okay. Imagine a world where machines are not only assist us, but live immediately with us in our day-to-day life. This is the world of robotics. This is our future world. Today we will embark on a journey exploring our realm opportunity of robotics where science fiction meets reality and innovation knows no boundary. Come on guys, this is Rama. Today I'm gonna give an intro to robotics. Okay, what is robotics? Robotics is a field that combines mechanical engineering, electronic engineering, and computer science engineering, creating a robot that work autonomous or non-autonomous. Yes. If we speak, if we speak about types of robot, the main one is industrial robot. For example, the robot we used to make car, and then exploration robot. Exploration is robot is like robot that can go to the place where human cannot go. Human does not want to go to research or collect samples, वगैरह वगैरह. And then service robot. Service robot is like a robot that can give service to us.
And then AI robot, for example, Tesla, that can work autonomously. If we speak about robot anatomy, there are three main parts of robot anatomy: actuator, sensor, control. Next slide. Actuator is nothing but Actuator is nothing but the device or motor that can work the robot movable. Sensor is like camera, ultrasonic waves that can sensor the robot, and then controls is like computer, like a microcontroller that can think, that is like a brain of robot. If we speak about programming language that required to program the robot, is mainly object oriented, C, Java, Python. If we see about the user cases of robotics, robots are in mostly in manufacturing area, healthcare, agriculture, space exploration, military, etc. If we see about prospects of robotics, um, robot robotic engineering, machine learning specialist, software engineering, electronic maintenance engineer, account manager, and robotics machine operator. Like many kind of opportunities we can get if we study robotics. If we speak about the salary part, there are um, 5, 5 LPA to 40 LPA people get salary from by studying as a robotic engineer. It's totally depends upon skill and experience. If we come to the conclusion part, I want to tell about the future of robotics. The future of robotics is too high. It's it's the rapidly growing field. So robotics is a good choice. All right, Aditi. Your turn now. So I know it's 5 p.m. now, but we'll take another like 5 to 10 minutes to cover this up for you. All right. All right. Hi everyone, I hope you're having a wonderful time here and I'm extremely sorry, but I'll be taking another 10 minutes of yours. Right? So now let's talk about data science, the highest paying job of the time. I'm Aditi Goyal, the tech lead at GDSC, and I'll have the opportunity to get you familiarized with this today. Right. So at some point, I'm sure all of you must have heard about data science. But what exactly is data science and what does it has to offer to all of us? So let's dive deeper into it and learn more about it. So as the name itself suggests, data science is like a field where you deal with data basically. It is a field of study that involves collecting the data, analyzing it, interpreting those last set of data to get out something useful. Right. It integrates the technologies, the techniques from statistics, mathematics, computer science, all of it together to uncover some patterns and analyze those large chunk of data. Now what does this analysis get you as a like data scientist get help them to do? So they basically help those data scientists answer certain questions which involve like what happened, like why happened, now what can be done to get some better outputs. Right, so this was all about data science. I know it seems a lot of work, but this is what data scientists get paid so much for. And if I talk about the salary expectation, then as a junior data scientist, the average salary in India lies anywhere between the range of 4 to 20 lakhs per annum, which is certainly an impressive amount, right? And as you certainly get promotions, you climb up the ladder, you can expect an increase in that. Now, moving forward, let's understand where data science is actually used. So it can be used almost anywhere and everywhere. Like you can think of it, you can integrate data science into it, which can range from business to healthcare, finance to marketing, education, literally anything. Now many of the few uses I have listed in front of you, which involves like predictive analytics, where you are forecasting something in for the future, like whether it could be some trends, some kind of outcomes or something. Fraud detection, where you analyze some kind of patterns to detect those suspicious behavior and try to overcome that. Next, we have a very famous use that is a recommender system, where you personalize some kind of recommendation based on the user behavior after their
deep analysis. Now, a very good example is the advertisement that you see on YouTube or some websites. The those advertisements that pop in front of you, they are most of the time aligned with your interest, and the science that work behind that is the data science. Exactly. Now, next we have from finance, that is risk management, fraud prevention, healthcare, e-commerce, marketing. Everywhere you can certainly learn more about it on YouTube or the website that you can see. Now, moving forward, let's see the future prospects. So data science certainly has got a huge potential, not only in India but in abroad as well. It has a like ever increasing demand from across the diverse industries for better and well informed decision making. It could be integrated with the emergent technologies like artificial intelligence, internet of things, then machine learning for enhancing the capabilities and giving you some better outputs, better like the better informations. Moving forward, let's understand like the requirements that you need for the data science. So the languages that are used are Python for versatility, R for statistic analysis, Jupyter software generally used for interactive computing, RStudio is used for the R uses, and hardware requirements generally depend on the kind of project scale you are working on. This would be more clear with the roadmap that is right in front of you. So of course, first you need to get started with something. Then moving forward, you need to learn the basics of mathematics and statistics. You can check in the picture and take a screenshot of it certainly for future references. Then moving forward, you need to learn about languages like Python, R, and data visualization. Then learning the tools, the basic tools, key tools for machine learning that is mentioned right in front of your eyes. Then of course, one of the most crucial part when it comes to data science, that is the profile building. Use platforms like YouTube, Quora, GitHub, Stack Overflow, and like build a strong profile that would help you later on when it comes to some job opportunities or something like that. Apart from that, I have a very nice suggestion that use Twitter or X for profile building. Like if you are doing anything, you're doing something like 40-day challenge, coding challenge, or like you're attending something, just document it over there because it would help you to give like a life portfolio and certainly help you future with that strong profile with a strong profile. Moving on to like prepare for the interview certainly and acquire some good jobs. Now in front of you, there are three terms, that is data scientist, data analyst, and business analyst. The three terms are often confused between. I know all three of them sound very similar. Of course, all three of them deal with data, but how do they deal with the data? All three of them deal with data in different manner. How does that happen? So a data scientist and a data analyst usually work on data models, while the business analyst usually focus on business strategies. Now, if I explain it in more in a descriptive way, then a data scientist usually analyze pattern in data and write some complex algorithms. Algorithms, Bhupesh also talked about earlier in his part, where it is certain like steps or instruction that we give to computers to solve a certain kind of problem, and they help in programming the computers. Whereas a data analyst, they help to develop data models that can later on be used for some kind of, uses that could include like developing some business strategies or something else that you need. And when it comes to a business analyst usually have a more business oriented approach. They usually focus on like developing, interpreting, and reports on how the business is operating, like what can be done more to increase the profits and those kind of aspects. Now, in one line, if I want to summarize this whole, if you like enjoy working with data, large chunk of data, you enjoy working on probability, mathematics, computer science, the data science can be the right choice for you. All right, thank you so much for bearing with me. All right, so we just have a last topic for today, that is blockchain. So we're going to talk about blockchain and how it is really, the next big thing that is coming up. So you must have heard about cryptocurrencies a lot, that cryptocurrencies are coming up, and like Bitcoin, Ethereum. So what we actually do is we build a blockchain on these cryptocurrencies like Bitcoin or Ethereum. So what it actually is, well, just think about it like a book. So there is a book that you issue from a library, right? Now that book, if you just turn around, you can see what, like
our library book don't have the person's name, but like a normal library has the name of the person, that who issued that book, when did he issue it, and from when and when did he issue that. So you can see your name, the person who issued it before, and like so on. So you can just think about uh, like blockchain, like that example. But the only difference between the blockchain and the like the normal, the normal transaction that is happening in the normal domain is that a normal transaction that you do, like if you transfer me 100 rupees on Paytm, that can be tracked by the bank and only your bank and you can see. But if we are doing it in a blockchain environment, that transaction can be backtracked a million times. We can see that who did it before me, and every transaction that is happening is there for the public to see. So, and that the library book is with you, and the library governs it. So the library has the ownership of that book. But in blockchain, it's like decentralized. Nobody, not even the government, can see. Government has a hold over it. They don't govern it. It's for the public, by the public. So it's decentralized. That is what these terms mean. And it's public, everyone can use it. And it's very secure because it's very hard to alter the contents of what is there in a blockchain, because every data is hashed. Now you can store your credit card information on Paytm, but it is hashed. Nobody can really get that information until they have the hashing. And that is why it is accurate and trustworthy. And smart contracts is like, the contracts would be executed if and only if this thing is completed. Like for example, if I have done my part, I've made a website, then only this contract would be marked as complete, which is a smart contract. So now I don't need a lawyer for that. So that is how blockchain is helping us. So people are building smart contracts because it's very much useful for the companies and everything. So these are some use cases which you can see that how crypto blockchain are used in real life. Cryptocurrencies, obviously, you are buying Bitcoin, like Elon Musk was promoting Dogecoin and a lot of that. So Doji, I guess that's how it's pronounced. So smart contracts, identity management. We are even planning to conduct the census or in the future election using blockchain because it's very secure. Everybody can see how the transactions or how something is actually happening. A digital rupee, you might have heard about it. It's built on blockchain. It's the next thing that you are going to build on. Like somebody mentioned, Alok mentioned in the chat about Web3. This Web3 is actually based on blockchain. It is the web that we are currently using is governed by something like Google or somebody else is governing that. But Web3 is decentralized. Nobody owns it. So we're going to talk about that in our further boot camps, and we're going to know NFT and digital assets are some of the examples. So what can you become with blockchain? Here are the different things that you can do. You can be a blockchain developer, architect, quality engineer, consultant, and the average salary is from 2 lakh to 20 lakhs. And this is just the starting point. This is the average salary I'm talking about. Um, I did a podcast once, like I had a podcast of my own. So I did a podcast with Pratham Prasoon. Like if you have heard his name, you must be seeing his name a lot because he's like 19 years old. He did not go to college, and now he's doing a lot in this domain. He's making smart contracts with a company called Eclipse, and he's earning a lot. He's earning 1 crore at the age of 19. So if you're thinking it like that, blockchain has a lot of potential, and you can follow him like at Pratham Prasoon. He's a great guy, not endorsing anyone, but just a great guy to follow. So the languages you need is Solidity. You need Rust, Ethereum for Ethereum blockchain, C++ for Bitcoin blockchain, Python and JavaScript for Web3. So this is actually something we'll be teaching you in a further like boot camps that we'll be doing. Now, the last part, how do you choose your calling? How do you know that we talked about a lot of domains right now? We're just going to take 4 to 5 minutes more and we're going to end this. So how do you choose among this? How do you choose which is meant for you? Which event is yours? How do you do that? So well, it's done on various factors. So I have a thing that you should do, because you it might be like you are really confused right now after hearing all of this, but I have a way that I can help you. So what you can do is you can choose 2 or 3 more fields as we discussed according to your interest.
and you can rate them like this, just like field you like, the difficulty, how popular it is, the skill that you currently have in that, like AIML, what's your current skill, the time you'll have to invest, what's the growth rate, research, Google is your best friend. How are you, how like is it enjoyable for you, are you enjoying doing that, the salary, how the salary is, and salary is the least important because uh, as you grow with experience, if you're doing good in that field, your salary would definitely increase. So don't worry about the salary at all. Then have the total marks, like 1 to 5. Just have the total marks. And like I took, for example, AI and ML and Android. So this is just for the visualization purpose. And then I thought, okay, AI, ML, I think I have a greater chance in learning. I'll do that for 3 months, and in 3 months if I like it, then I would definitely go on in that domain and do something more with it. But if I don't like it, what I'll do is I'll go on to the next one and do something else with it. So this is something which is really suggested. Now you can take a screenshot of this, but I'll also be sharing a link because this video will be uploaded to our YouTube channel. You can go that, you can find this template, you can make this for yourself, and it will be very helpful. You can take a screenshot of this. Like if you want to go into DSA, these are the things, web, app, and all of the different domains have these things. Like if you enjoy logical thinking and everything, you can go for DSA and so on and so forth. You can just take a screenshot, or else it will be available on our YouTube channel. Now, what languages and tech that you have to learn? It is also here. You can take a screenshot. You can just know that which language and which tech is needed in order to pursue like a particular domain. Now, how will GDSC help you? What actually we'll do, बता तो दिया इतनी सारी चीजें, ठीक है, अब हम क्या करेंगे उसके लिए, हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे, तो we'll tell you that. तो हमारे पास ना बहुत सारी चीजें देने को, वी आर पावर्ड बाय गूगल, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ हम करेंगे कुछ, बस क्लब कहलाने को नहीं, ठीक है. तो द फर्स्ट थिंग दैट वील डू इज वील गिव यू बूट कैंप्स. बूट कैंप्स, अगर मैं लेमन टर्म्स में कहूँ आपको, हम बेसिक से इंटरमीडिएट तक विल टीच यू फ्रॉम स्क्रैच. इफ यू डोंट नो एनीथिंग, फॉर एग्जांपल आपको डीएसए सीखना है, विल टीच यू. आपको ऐप डेवलपमेंट सीखना है, विल टीच यू. एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ हम आपको बैठ के सिखाएंगे फ्रॉम स्क्रैच. अगर आप बेसिक्स में हैं, आपको वो सिखाएंगे, इंटरमीडिएट है तब भी हम आपको सिखाएंगे. हम वर्कशॉप्स कराएंगे, वील बी डूइंग वर्कशॉप बूट कैंप इन द नेक्स्ट 7 मंथ्स. इन द नेक्स्ट 7 मंथ्स वील बी डूइंग ऑल ऑफ दिस, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी आफ्टर एग्जाम्स. और फिर हम कोडिंग कॉन्टेस्ट भी रखेंगे. एक हमारा कोडिंग कॉन्टेस्ट आने वाला है एग्जाम्स के बाद, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे उस चीज के लिए, और हाँ बस टी शर्ट नहीं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी रहेंगी. तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे उस चीज के लिए, एंड ताकि आप लोग सीखें उस चीजों को. और हर बूट कैंप के बाद भी एक कोडिंग कंटेस्ट होगा, हैकाथॉन्स भी कराएंगे हम एक गूगल के स्पीकर को भी बुलाएंगे हमारे कॉलेज में, वो आके हमें मोटिवेट करें, हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए. और ऑब्वियसली रिवॉर्ड्स रहेंगे, रिवॉर्ड्स तो हम देंगे ही देंगे. तो जनवरी के बाद से ये चीज हमारी होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. अभी के लिए हम एक वेब डेवलपमेंट बूट कैंप कराएंगे, थोड़ी दिन बाद से हमारा स्टार्ट होगा एग्जाम के बाद से, लाइक स्टार्टिंग जनवरी. और ये सारे बूट कैंप जो है साइमल्टेनियसली होंगे. और जैसे क्लाउड स्टडी जैम हुआ था, लाइक देयर वाज क्लाउड स्टडी जैम, विल नाउ बी हैविंग एंड्रॉइड स्टडी जैम एज वेल. नाउ एंड्रॉइड स्टडी जैम इज अ बिट डिफरेंट, but we'll be doing that. Stay tuned for that. As soon as we get the information from Google, we'll be passing it on to you, and we'll be doing that. We'll also have all of these, which we talked about. Now, how to join our community? You can scan this QR code, and you can join our community if you are not already in the community. So you can just scan this, take a screenshot, and then go upload it to your Google, like Google Lens, and you can join our community. This is our WhatsApp group. So anything and everything that we'll do, we'll be doing on this. And you can join our Discord and socials through this QR code also. You can take a screenshot. Thank you, and thank you for joining. Abhi aap leave mat karo, because there's this one important thing.